All right. Can you see it? Yes, sir. Are you there? Yes, sir. Yeah. Yesterday we have seen, first we have seen degree of freedom. In that we have seen there are how many ways any gas particle can have the energy. In that we have seen in all the type of gas molecules, all the type of gases. Translation degree of freedom is 3. Rotational depends upon the type of the gas. Monatomic 0, diatomic 2, and polyatomic, nonlinear polyatomic, it's 3. Vibrational are high temperature dependent and they are complex one, therefore we don't discuss. And then we have seen table in which we have seen total degree of freedom excluding the vibrational mode. ये देख लिया था हमने. Then we have seen equipartition of energy. In that we have seen all the degree of freedom will have equal energy and which is equal to 1 by 2 kBT, temperature dependent, and there are these two constants. And therefore, total energy of single gas molecule or atom will be degree of freedom into energy in 1 degree of freedom. एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल विल गेट. ठीक है. And if we know the energy of one molecule or one particle of the gas, then we know the energy of whole gas, which is called internal energy. है ना. एक पार्टिकल की इतनी है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं गैस में, n से मल्टीप्लाई कर दिया. बट टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स आर आल्सो गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स multiplied by Avogadro's number. So then what we get is Na into Kb is called universal gas constant. तो हमें ये मिल जाएगी potential energy, I mean internal energy is half into NFRT. ठीक है, half of नफरत we can read it as, है ना. And change, if temperature changes, internal energy will also get changed. तो change में हम डेल्टा लिखते हैं या डी भी लिख सकते हैं du. All right. तो up to here we did it. Any doubt till now? डाउट है इसमें आपको? No, sir. Okay. We'll continue further. Let's see what next. So total energy depends upon temperature and others are constant, है ना. ये चारों constant ही है. Now using this, we can find out the value of Cp and Cv in terms of R. R के terms में निकाल सकते हैं. फिर उनका रेशियो भी निकाल सकते हैं, which is called gamma. Adiabatic index we call it. All right. So let's see further. Calculation of Cp, Cv, and gamma. So we know previous relation also this one. We know the two relations, है ना, of internal energy. Since internal energy is, or change of internal energy is half of NFRT, and also change of internal energy is also given by NCV delta T. Equate कर दो. This is equation 1. This is equation 2. Equating both, since both are for change of internal energy, तो NCV delta T, equation 2 को पहले लिख रहे हैं, N1 को बाद में लिख रहे हैं. तो N and delta T getting cancelled. So CV, you know what is CV? Do you remember?
CV is the molar specific heat at constant volume. FR by 2. FR by 2. And how to get CP now? CP कैसे निकालेंगे? बोलिए CP निकालने के लिए क्या करें? CP is R plus CV. Since CP minus CV is equal to R, तो बस इससे CP निकाल सकते हैं. ठीक है, निकाल लेते हैं. चलो, R कॉमन ले लिया, 1 plus F by 2. तो गामा निकाल सकते हैं अभी. Therefore, adiabatic index gamma is equal to Cp by Cv. Cp is R 1 plus F by 2 और ये क्या है? F R by 2. गामा कितना आ रहा है देखो, कितना आएगा? डिवाइड कर देंगे ना, यहाँ पर देखो ऐसे लिखेंगे 1 plus F by 2, नीचे F by 2, F by 2 से डिवाइड कर देंगे अलग अलग करके. तो इट इज, और वी कैन राइट गामा इज इक्वल टू 1 plus 2 by F. तो गामा एंड F का रिलेशन भी हमें मिल गया. दिस इज objective question for competitive examination. But even if we remember this much, so everything can be done. Further, you can just do everything without just remembering this. Only ये relation याद रखना है CV का. That's all. That's enough. CP is R more. R उसमें ऐड कर देंगे, जो भी आएगी वैल्यू R ऐड कर देंगे तो CP मिल जाएगा. तो रेशियो निकाल सकते हैं. तो दिस इज द मेन in terms of R CV. So now we can make the table itself. What is the value of CV and CP for monatomic gas, diatomic and polyatomic gas? तीनों का हम टेबल बना सकते हैं और उसमें हम CV भी, CP भी एंड गामा भी, तीनों वैल्यूज वी कैन पुट इट. ठीक है, ये समझ में आ गया इतना. हमने दो, व्हाट वी डिड, वी इक्वेटेड द टू इक्वेशंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वहां से हमें CV की वैल्यू R के टर्म्स में और डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में मिल गई. एंड देन CP में R ऐड कर देंगे और दोनों का रेशियो निकालना है तो गामा से डिवाइड कर देंगे, है ना. दिस इज इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली. इसको हम ऐसे कर सकते हैं. इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दिस, दिस इज नथिंग बट ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? प्रूव दैट एडियाबैटिक इंडेक्स गामा इज इक्वल टू 1 plus 2 by F. ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो हमने डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर लिया और क्या. ठीक है, main thing is this. Can you remember this? And they are useful for your what is called, particularly for competitive examination, numerical solving. They will help you out. And in our NCERT book, they are not properly given these all things. We are doing together. So let's see now table for CP and CV and gamma for all three type of gases: monatomic, diatomic, and polyatomic. Okay. Any difficulties till now? Did you miss any point? You can ask. If you missed any point. ठीक है, shall we do further?
देखिए अभी टेबल बनाते हैं हम लोग, ये वाले देखो, टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वैल्यू ऑफ, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वैल्यू ऑफ सीवी, यहाँ पर सीवी है, वैल्यू ऑफ सीपी एंड गामा। तो मोनोटॉमिक, फॉर एग्जांपल हीलियम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। तो सीवी कितना होगा, सीवी का फार्मूला क्या था, should we write here formula for CV, just a minute, wait, यहाँ पे मैं फार्मूला, ओके सॉरी, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, क्या है, CV इज इक्वल टू FR/2, ठीक है। तो F की वैल्यू 3 पुट कर देंगे ये वाली यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3R/2, और CP में क्या है, प्लस R कर देंगे, तो 5R/2, एलसीएम ले लेंगे, 5R/2 आ गया। एंड गामा इज व्हाट, रेशियो ऑफ CP/CV, ये CP है और CV से डिवाइड कर देंगे 3/2 R से, R कैंसिल, 2 कैंसिल, तो 5/3 which is equal to 1.67. And in case of diatomic, degree of freedom is 5, F is 5, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5R by, what we get is 5R/2, दिख रहा है आपको ये। एंड इसमें अगर हमने R ऐड कर दिया, LCM ले लिया, इट विल कम 7R/2, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 7/5 मिलेगा, विच इज 1.2, 1.4 सॉरी, कैन यू सी, एयर इज डायटोमिक गैस, एयर को हम डायटोमिक लेते हैं, उसका एडियाबेटिक इंडेक्स इज 1.4। पॉलीएटॉमिक विल हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 6/2 विल बी 3R, और इसमें R ऐड कर देंगे, दिस विल बी 4R, एंड 4R को 3R से डिवाइड कर देंगे तो गामा मिल जाएगा 4/3 विच इज 1.33। तो मिनिमम है ये, पॉलीएटॉमिक के लिए मिनिमम गामा की वैल्यू, मोनोटॉमिक की गामा की वैल्यू मैक्सिमम होती। तो समटाइम्स दीज वैल्यूज आर गिवन, sometimes not given, so you should have idea how to get this. Particularly this is helpful for numericals without considering the vibrational modes. For numericals it is useful table because sometimes these values are not given, you should be in position to get it. गामा की वैल्यू कभी देंगे न्यूमेरिकल्स में, एडियाबेटिक इंडेक्स, आई मीन एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा आया था हम लोग उस समय जो न्यूमेरिकल किया था, दैट वैल्यू वाज गिवन, but sometime it may not given, they may only write monatomic, diatomic, polyatomic, then you should be in position to get it, ठीक है। और at one more place we got the 1 by gamma, याद था, आइसोबारिक प्रोसेस में हमने निकाला था रेशियो ऑफ चेंज ऑफ इंटर एनर्जी टू द हीट सप्लाइड, कुछ ऐसे आ गया था CV/CP, तो 1 by गामा आ गया था। तो नाउ इफ इट इज रिटन इट इज मोनोटॉमिक गैस, तो गामा की वैल्यू हम ये पुट करेंगे 5/3, 3 ऊपर आ जाएगा। याद है कि नहीं, ये क्वेश्चन था आइसोबारिक प्रोसेस में, आई टोल्ड यू, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ इट इज डायटोमिक देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस, पॉलीएटॉमिक यू विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। So this is useful for numericals point of view, and you have to remember this. Only if you remember one thing only, that's all. ये वाली CV is FR/2. You can get all the remaining things. Degree of freedom तो हमें इजली लर्न हो गई होंगी, मोनोटॉमिक में 3 एंड डायटोमिक में 5 एंड पॉलीएटॉमिक में 6। Alright. So this is that useful table. Based on this, we are going to do one numerical, and then we'll see next topic. Anything you want to ask?
Are you there? Yes, sir. All right. देखो जैसे ये क्वेश्चन है, this is a question asked in some examination, particularly competitive examination. Gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total energy of the system. तो फार्मूला हमने देखा था, टोटल इंटरनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय U इज इक्वल टू कितना है, क्या है, नफरत वाला फार्मूला लिख सकते हैं, हाफ ऑफ नफरत NFRT, ठीक है। तो टोटल एनर्जी के लिए U1 प्लस U2 लिखना पड़ेगा। तो U1 में हाफ N1 F1 RT, टेम्परेचर सेम है दोनों का, और U2 सेकंड गैस के लिए हाफ N2 F2 RT है ना, ठीक है। तो now you can put the value of N1 and F1, N2 and F2, पुट करके देखिए कितना आ रहा है। Yeah, N1 is given 2 moles है ना, पुट कर देंगे 2 मोल, हाफ भी है नीचे, पहले 1/2 into 2 F1, ऑक्सीजन इज डायटोमिक, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 RT, 1/2 N2, सेकंड गैस हैज गॉट 4 मोल्स, F2, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, आर्गन इज व्हाट, मोनोटॉमिक और डायटोमिक और पॉलीटॉमिक, it is monatomic. As a chemistry student, you are supposed to know all this, which one is monatomic, diatomic, polyatomic. तो F2 is कितना है मोनोटॉमिक का, 3, तो ये 2 कैंसिल हो गया और इधर 2 6 आ गया, 5 RT plus 6 RT, तो it is coming 11 RT, option number D. All right. No problem. This is JE question, IIT question. This. ठीक है, no problem. No, sir. Okay, noted down. Okay, moving on to the next one. ये बताओ कि एडियाबेटिक इंडेक्स का जो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप है, इट डज एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस? क्या था स्लोप एडियाबेटिक प्रोसेस का? माइनस गामा P/V था ना, तो गामा पे डिपेंड कर रहा है ना, तो गामा किसका मैक्सिमम है? मोनोटॉमिक का,
तो स्लोप विल बी मैक्सिमम फॉर मोनोटॉमिक। अगर हमने ग्राफ ऐसे ड्रा किया, एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ ड्रा किया, तो मोनोटॉमिक का सबसे ज्यादा स्लोप आएगा, दिस कर्व लुकिंग मोर स्लोपी, डायटॉमिक का लेस स्लोप, पॉलीएटॉमिक का और कम स्लोप है। ये पॉलीएटॉमिक का गामा 1.3 थी और प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप है गामा पे डिपेंड करता है। गामा कम किसका है? पॉलीएटॉमिक का। मोनोटॉमिक का सबसे ज्यादा है 1.67, तो उसका ज्यादा स्लोप होगा, मोर वर्टिकल इट विल बी, है ना। स्लोप मतलब 90 डिग्री के पास कौन सा कर्व है, मतलब वर्टिकल कौन सा है। पूरा वर्टिकल होगा तो इनफाइनाइट स्लोप वी कॉल इट, हॉरिजॉन्टल हो गया तो जीरो स्लोप। स्लोप हम देखते हैं गार्डन में जाइए, वो स्लोप रहता है उसमें, तो ज्यादा हॉरिजॉन्टल है तो जीरो स्लोप, वर्टिकल है तो इनफाइनाइट, एंड क्लोज टू वर्टिकल मींस मोर स्लोप, मैक्सिमम स्लोप, लाइक दिस। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू नो, स्लोप बेस्ड। तो दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैज टू रिमेंबर दिस टेबल, है ना। मैक्सिमम किसका है दैट यू मस्ट बी नोइंग, एंड मिनिमम किसका है दैट यू हैव टू रिमेंबर, देन यू कैन रिलेट विद द स्लोप। ठीक है। Now, next one is the mean free path of gas molecules. किसकी बात हो रही है? गैस मॉलिक्यूल की। तो what is the meaning of that mean free path? Mean means average, free path means the between the two collision. Suppose particle collide here, यहाँ पे उसका collision हुआ, after collision it goes in this direction and collides here जाके, यहाँ पे जाके collide हुआ किसी particle के साथ, तो उसकी direction change हो गई, इधर आ गया। तो distance between one and second collision is L1 and second and third collision यहाँ पे collide हुआ is L2, फिर इधर चला गया, यहाँ पे जाके कोलाइड हुआ, डिस्टेंस L3। तो जो डिस्टेंसेस है वन एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ के बीच का, सभी डिस्टेंसेस को ऐड कर लो एंड डिवाइड बाय n। टोटल नंबर ऑफ n रीडिंग्स यू कैन टेक, यू कैन काउंट n नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड ईच कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक में L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, जितनी आपने रीडिंग्स ली उससे डिवाइड कर दो। 10 रीडिंग्स ली तो 10 से डिवाइड करो, n रीडिंग्स ली तो n से। तो दिस इज द, इट इज द एवरेज डिस्टेंस between two successive collisions of molecules of gas. Got it? तो average distance between two successive collisions, तो सबका मीन ले लेंगे, वो एवरेज डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। किसी में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा between two collisions, in some of the cases it may cover more distance. All right, so it is mean free path of gas molecule is the mean distance, I mean average distance between two collisions. But this is again very difficult to measure all this. We cannot see the molecules even with the microscopes, है ना? So this method is difficult. Therefore, we'll see what is the other method, practical method to get the mean free path of gas molecule. ठीक है, तो देखो ये NCERT बुक का डायग्राम है। Here is the one molecule whose diameter is d. आइडेंटिकल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इधर भी दिखाया, 3 मॉलिक्यूल फ्यूजन। नाउ सपोज यहाँ पर molecules of gas, suppose the molecules of gas are the spheres of diameter d. diameter d है, फोकस ऑन सिंगल मॉलिक्यूल, इसके ऊपर फोकस करते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर, विच विद द एवरेज स्पीड v,
इसकी एवरेज स्पीड v है, it will suffer collision with any molecule that comes within the distance d between the centers. देखो इस दोनों इस डिस्टेंस में कोई भी मॉलिक्यूल होगा उससे कोलाइड करेगा, बिकॉज सी व्हेन इट रीचेस हियर, इसके साथ देखो यहाँ पे टेंजेंशियल कोलिजन होगा, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में d, इतनी डिस्टेंस तक अगर डिस्टेंस बढ़ गई गोज अवे, देन इट विल नॉट कोलाइड. सिमिलरली व्हेन इट कम्स हियर, इसके साथ भी कोलाइड होगा. इन दोनों के सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है d. That's what they want to say. It will suffer collision with any molecule that comes within the distance d between the centers of two molecules. ठीक है, समझ में आ गया. तो d डिस्टेंस तक के पार्टिकल, सपोज इट्स सम एनी अनदर मॉलिक्यूल इज हियर, तो उससे तो डिस्टेंस कम हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस. सपोज एनी मॉलिक्यूल इज हियर लाइक दिस, उसका सेंटर ये है, इसका तो सेंटर ये यहाँ पे रहेगा. दिस डिस्टेंस इज लेस देन d, इट विल इजीली कोलाइड. बिल्कुल सामने आ गया तो हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा. ठीक है, तो इन टाइम डेल्टा टी इट स्वीप्स द वॉल्यूम. कितना स्वीप करेगा ये वॉल्यूम, इसको हम फोकस करें. दिस ये वन, ये मॉलिक्यूल को फोकस कर रहे हैं. डेल्टा टी में कितना वॉल्यूम कवर करेगा, डिस्टेंस कितनी लेनी है, डी लेनी है. ये इसका जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, इफेक्टिव वॉल्यूम इतना, इतने दिस मच रेडियस विल बी डी नाउ, और डिस्टेंस कवर्ड विल बी, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है वैसे तो, पाई आर स्क्वायर एल. इसका रेडियस कितना लेना है, डी तक डिस्टेंस से कोलाइड करने वाला है, तो आर की जगह डी लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें. तो पाई डी स्क्वायर इंटू डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, v इंटू टी. डिस्टेंस क्या होता है, v वेलोसिटी इंटू टाइम. तो वेलोसिटी इन्होंने एवरेज ली है, टाइम को डेल्टा टी लिया है, तो दिस विल बी डिस्टेंस. तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पाई डी स्क्वायर इंटू डिस्टेंस विल बी v इंटू टी. ठीक है, इन टाइम डेल्टा टी इट स्वीप्स द वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर v t, wherein any other molecules will collide with it. इतने वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर गोइंग टू कोलाइड विद दिस मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल. ठीक है, समझ में आ गया. इतने वॉल्यूम में whatever molecules comes in this volume, all are going to collide with this particle, this molecule. कन्विंस, यहाँ तक समझ में आ गया आपको. ये देखो इसकी जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू डी, तो पाई डी स्क्वायर एल होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है. तो आर की जगह डी स्क्वायर लेना है, एल की जगह वी इंटू टी लेना है, वेलोसिटी इंटू टाइम. दैट्स व्हाट इज डन हियर. ठीक है, दिस वाज द वन पॉइंट ऑफ दिस. ठीक है, नाउ विल सी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन दिस वॉल्यूम. इतने वॉल्यूम में मॉलिक्यूल होंगे कितने, उनके साथ टकराएगा सबके साथ, इट विल कोलाइड. तो नंबर ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए एनवी लेना पड़ेगा, वॉल्यूम इन यूनिट, आई मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम लेना पड़ेगा, एनवी सिंबल लेना पड़ेगा हमें, जैसा कि प्रीवियस डेरिवेशन में किया था हमने. नाउ ठीक है, यहाँ तक डन. आई एम फॉलोइंग योर टेक्स्ट बुक मेथड. ये डायग्राम भी टेक्स्ट बुक का है, सिंबल्स आल्सो वी आर टेकिंग दैट ओनली. Now further, let's see. Let NV, थोड़ा सा डिस्टेंस क्लोज कर देते हैं. Let NV be the number of molecules per unit volume, molecule density per unit volume. Number of collisions
तो उनके सबके साथ टकराएगा. नाउ दिस इज द इफेक्टिव वॉल्यूम एंड दिस इज फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो number of collisions in now whatever the particles are there, unit volume, whatever the कितने particles होंगे इसमें, nv is the for unit volume covered is pi d square v into t. तो इतने collisions होंगे, जितने भी molecules आएंगे इधर 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 इधर, है ना, सबके साथ collision होगा. It will start from here, यहाँ से beginning करेगा, तो it will collide. So number of collisions in time delta t will be molecule density, molecules per unit volume into the volume covered in delta t. Shall I write it separately? इसको मैं separate लिखता हूँ, यहाँ पे इसको separate लिखता हूँ. It will be equal to particles, molecules per unit volume, molecules per unit volume into effective volume. Effective volume is जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसका, उसी में that will be effective volume, या simply volume लिख लो, volume in time delta t लिख लो, अगर if you want to avoid the confusion. Volume in time, volume covered in time delta t. ठीक है, तो volume covered in time ये है. तो number of collisions हो गई. These are the total number of collisions in time interval delta t. ठीक है, number of collisions in time interval delta t. Clear यहाँ तक? No response coming. Convinced or not? I'm going slow. Yes, sir. Okay. तो देखो अभी इसको अभी हमें number of collisions in time interval delta t, but we are more interested in number of collisions per second. पर सेकंड के लिए डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो पर सेकंड मिल जाएगा, which will be called rate of collision or frequency of collision. Number of collision 1 second, जैसे हम बोलते हैं number of oscillation per second is called frequency. Similarly here number of collision per second will be called rate of collision or frequency of collision. और उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन मिल जाएगा. That's what we are going to find out. Let's see. Now we can write from this relation. We can write number of collisions per second. Can you see here? Number of collisions per second. That will be called frequency also. तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, एक सेकेंड में निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करना पड़ता है. डेल्टा टी विल गेट कैंसल हियर. तो इसको what else we can call it? Rate of collision also we can call it. Number of collision per second is also called rate of collision or frequency. Frequency का सिंबल F ले रहे हैं हम लोग. तो frequency of collision will be delta t getting cancelled. Remaining terms will be there. NV is there, pi d square is there, and V is there. So this is the rate of collision or frequency of collision. So somebody asks you find out the rate, number of collisions per second or frequency of collision or rate of collision. So you have to use this formula. But what we are interested in, mean free path, time of collision, time between two successive collision. तो frequency को reciprocal कर देते तो time मिल जाता है हमें. चलो time is reciprocal of frequency. तो time of collision निकाल के, time between successive collision निकाल के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन फ्री पाथ मिलने वाला है. ओके, टाइम निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है. Therefore, time between two successive collision will be t is equal to 1 by f. SHM में भी हमने सिंबल यूज किए थे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर हियर आल्सो. तो टाइम इंटरवल को टाउ लिखते हैं यहाँ पर. टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज रिटन टाउ व्हिच इज 1 by f. ये वाले टर्म यहाँ आ जाएंगे पूरे. तो टाउ विल बी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये सब डिनोमिनेटर में आ गए. ठीक है, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मिल गया 1 upon these terms. ठीक है. Now after getting time, now we are in the last step. टाइम मिलने के बाद वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है? डिस्टेंस. दैट विल बी द मीन फ्री पाथ.
distance between two successive collision मिल जाएगा. So that's what we are going to do. Now average distance between two successive collision, symbol हम लोग L ले रहे हैं, L बार लिख देते हैं इसमें, L के ऊपर बार लगा average. तो is average velocity into time between two collision, average velocity into time between two collision. तो वेलोसिटी ऊपर और ये पूरा टर्म नीचे आ गया, तो v भी कैंसिल हो गया अभी. एवरेज वेलोसिटी हैज गॉन. तो व्हाट इज लेफ्ट? व्हाट इज लेफ्ट इज 1 upon nv particle density into pi into d square. These are the terms remaining. That is the free mean path. तो ये कॉमन सेंस से हम थोड़ा चेक करते हैं इसको. मोर डेंसिटी mean free path will be less, molecules will be closer. है. ये क्या है? Density, molecule density, number of molecules per unit volume. अगर ये more है, mean free path is going to decrease. They will be colliding earlier. ज़्यादा density, again they will collide earlier. Bigger molecules will collide earlier. So mean free path will decrease. Getting or not? So this is the mean free path which depends upon. अच्छा अभी भी it is not yet over. It is not yet over. इसमें एक पॉइंट और टर्म, यही टर्म्स है, बट एक और पॉइंट आने वाला है इसमें. ठीक है, तो these terms are there. Now one more point is remaining here. What is that? देखो what we have done कि इनको हमने रेस्ट पे ले लिया और this is moving. तो हो सकता है ये इधर चला जाए या इधर भी आ सकता है. This also can go this side and can come this side, can go this side, can go this side, can. The next moment they can go anywhere. They may collide and may not collide. So other particles are taken stationary, and with that this relation comes. But since other particles are also moving, then there is the one factor is to be included. That factor of motion should be included. In this derivation, we assumed other molecules at rest, but all molecules are moving. Therefore, average relative velocity is taken. Relative velocity is taken, which is √2 times of the average velocity. Velocity नीचे था, तो उसका √2 times करना पड़ेगा. तो यहाँ पर √2 आ जाएगा. ठीक है, तो √2 times relative velocity अगर वेक्टर से निकालेंगे, relative velocity का फार्मूला लगा के, एंड उसमें cos थीटा वगैरह भी आता है, cos थीटा की एवरेज वैल्यू पुट करनी पड़ती है. दैट कम्स √2 अंडर रूट ऑफ a square plus b square minus 2ab cos थीटा. तो थीटा तो एवरेज एंगल लेना पड़ता है और ये बचेगा अंडर रूट आ जाएगा इसमें. तो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ये 0 हो जाएगा. तो √2 टाइम्स ऑफ v. तो यहाँ पे √2. ठीक है, so that they have added this relative velocity they have added here. So you don't have to prove √2 कहाँ से आया, but √2 से मल्टीप्लाई करना. But these things terms remaining same. So what we were discussing, if density goes up, mean free path will go down. If diameters big molecules are bigger in diameter and radius, then average velocity mean free path will again come down, and vice versa. तो ये derivation देखिए, if it is done, it is taught to you in the class, then it can be asked. Can you see whole thing here? Diagram separately you can see. Anything you want to clarify here?
तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये ऐसा करना था यहाँ पर, यू विल से कि सर डेल्टा रूट टू उधर भी आएगा, बट एक्चुअल में इट इज डन लाइक दिस। देखो यहाँ पर देखो, एक्चुअल में इफ यू सी द डेरिवेशन हियर, जस्ट लेट मी मेक द चेंज, डेल्टा v, that v is brought from here to here। मैं सिंपलिसिटी के लिए वहां पे लिख दिया था फ्रॉम द रिलेशन। एक मिनट देखो, यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू डेल्टा, आई मीन एवरेज वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिखा था, बट इट विल बी लाइक दिस कि ये टर्म जो है ये यहाँ पे लाया जाएगा, एंड देन चलो मैं चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन कि रूट टू ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, इट विल गेट कैंसल। तो लेट मी मेक स्लाइड चेंजेस हियर। नाउ v को इधर ले आते, देखो एवरेज वेलोसिटी को इधर ले आते, nv by d square, but this is average velocity multiplied by time is nothing but a mean free path, so that is your 1 by nv by d square. Mean free path is velocity into time, since it is v into t. Got it? अभी ठीक है, इसको हमने time into velocity is nothing but a mean time between two successive collision, and average velocity is nothing but a mean free path। mean free path का सिंबल हम लोग यहाँ पर हम लिख देते हैं L बार। ठीक है, क्लियर नाउ? रूट टू का कंफ्यूजन नहीं है ना भाई? ऑलराइट, okay, let's see. There is one question based on this mean free path, not mean free path, इस पर है, देखिए रेट ऑफ कोलिजन पर है, दिस रिलेशन पर। तो रेट ऑफ कोलिजन इज nv into pi d square into average velocity। वी बार को इधर शिफ्ट कर दिया, देखो इधर, let us see, check point देखते, how much could you get? There are two molecules given, read this question, one is A, another is B, A का diameter 2d naught है, but velocity is v naught, and B का diameter d naught है, and its average molecular speed is 2v naught, it is fast, छोटा वाला fast। is placed in a identical container, which gas has the greater average collision rate? दोनों का तो वो वन मोल है क्या?
देखो दोनों का 1 मोल दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब उनकी आइडेंटिकल कंटेनर में है, तो एनवी भी सेम हो जाएगा। एनवी क्या होता है? नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी सेम हो जाएगा। नाउ विच गैस हैज द ग्रेटर एवरेज कोलिजन रेट? तो कोलिजन रेट का फार्मूला क्या है? एनवी इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू वी। एवरेज वेलोसिटी का सिंबल वी ले रहे हैं हम लोग, उसमें लेस देन ग्रेटर देन सिंबल नहीं लगा रहे हैं, जस्ट कीपिंग द सिंबल easier one. Let's see, let's check it. NV pi d square into V. ठीक है, तो क्या आंसर होगा बोलिए? तो ये तो सेम होगा, NV सेम है, पाई सेम है, डी स्क्वायर वी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर वी। ये प्रोडक्ट जिसका मोर होगा दैट विल हैव हाई फ्रीक्वेंसी रेट। इसका डायमीटर कितना है? फॉर ए इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2d नॉट स्क्वायर इंटू वी नॉट। ये कितना आ रहा है? 4d नॉट स्क्वायर इंटू वी नॉट। और फॉर बी या पूरी वैल्यू निकाल देते हैं ना एक साथ, चलो। फॉर ए रेट इज एन वी इंटू पाई, ये हो जाएगा 4d नॉट स्क्वायर इंटू वी नॉट। फॉर बी रेट विल बी एन वी एंड पाई तो सेम है, डी नॉट स्क्वायर टू वी नॉट। किसका मोर है? देयरफॉर ए हैज मोर कोलिजन रेट। ठीक है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, बाकी टर्म तो सेम। डी का स्क्वायर हो रहा है ना, तो एक का डायमीटर डबल है, एक का वेलोसिटी डबल है, वेलोसिटी का स्क्वायर तो हो नहीं रहा है। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो कोलिजन रेट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मीन फ्री पाथ आ जाएगा। कोलिजन रेट का रेसिप्रोकल ये है ना, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ अगर निकालना है तो वी तो वी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। मीन फ्री पाथ के लिए रिपीट करते हैं, रिपीट फॉर मीन फ्री पाथ। सेकंड पार्ट, which has more mean free path. तो उसका सिंबल क्या है अपने पास? L। L is equal to 1 by root 2 NV D square होने है ना, पाई भी है, वो भी कांस्टेंट ही है ना, उसका तो यूज होगा नहीं, तो पाई डी स्क्वायर। तो मोर किसका है? बी का डायमीटर कम है। ये डायमीटर क्या है बाय द वे? यहाँ पे हमें डायमीटर जो है, डायमीटर इज ऑफ कोर्स जो डी था, दो मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो इट विल बी इक्वल टू डायमीटर आल्सो। अगर हम ध्यान से देखें, दो मॉलिक्यूल के सेंटर, यहाँ पर देखो ध्यान से, ओके, इफ यू सी द डेरिवेशन, डी विल बी इक्वल टू डायमीटर आल्सो। डी इज नथिंग बट डायमीटर आल्सो। यहाँ से हमने देखो, यहाँ से हमने दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लिया, बट इट इज इक्वल टू डायमीटर। अगर सी केयरफुली, this is d only. Because of diameter, this center to center distance is coming d only. Because the value of diameter d, center to center distance is coming d. तो diameter किसका less है उसका more होगा, तो answer will be therefore d, since its diameter is
इज स्मॉल, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर इन टू सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज डिस्टेंस कितनी मोर होगी ऐसे कंपेयर करें तो? नीचे 4 आ जाएगा, ए में नीचे 4 आएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे 4d स्क्वायर हो जाएगा, और ए में और बी में डी स्क्वायर, डी नॉट स्क्वायर होगा, इट विल हैव 4 टाइम्स, इट विल हैव, रेशियो निकालेंगे, इट विल 4 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू ए। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. This is the question you can remember. Particularly this topic is mostly asked in competitive examination, ज्यादा आता है, JEE and NEET के लिए it can be useful. ठीक है? Anything you want to clarify here? No, sir. Okay. Some of the numericals we can see here in this. जैसे ये numerical है, देखो. Tomorrow we'll finish the numericals and then we'll start revision of the topics जिनका टेस्ट मंडे को है ना, उसका रिवीजन शुरू कर देंगे कल ही, because this will be our only few numericals we have to do. Then we'll start revision of thermodynamics and उससे पहला वाला चैप्टर कौन सा है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, वी हैव द 2 minutes, वी कैन डू दिस क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 13। देखिए 3 वेसल्स है, सेम कैपेसिटी मीन सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, having the gas at same temperature, same pressure. The pressure be same, temperature be same. All 3 terms are same. PVT are same. The first vessel contains neon, which is monoatomic, and second contains chlorine, which is diatomic, and then third contains uranium hexafluoride, which is polyatomic. Do the vessels contain equal number of respective molecules? इक्वल होंगे कि या नहीं इक्वल होंगे, ये पूछा है पहले तो। चलो पहले ये पार्ट कर लेते हैं। डू दे हैव इक्वल नंबर? बोलिए, इक्वल और अनइक्वल? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइटम्स विल बी सेम और डिफरेंट? अच्छा, नियॉन का मोलर मास 20 ग्राम होता है, इसका 35 ग्राम है, एंड थर्ड वन इज 352 ग्राम। So number of particles will be same or different? Different. देखो अगर हम फार्मूला चेक करते, PV is equal to nRT, which is also equal to NKBT. NKBT, एक तो ये रिलेशन है, दूसरा PV is equal to N into capital N into KBT. Pressure same, volume same, temperature same, Boltzmann constant same for all. The number of molecules will be also equal. Equal number of molecules will be there because Yes. pressure, volume, and temperature are same. Therefore, this is what is also called Avogadro's law. You know, अगर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में तो नहीं है। Avogadro's law: equal volume will contain equal number of gas particles provided pressure and temperature conditions are same. This is also called Avogadro's number. More volume, more particles, simple and directly proportional. V directly proportional to T, sorry, V directly proportional to N for same pressure and temperature. Avogadro's law भी बोलते हैं उसको. It is not mentioned in our physics. तो same, yes. Second part you can do yourself. Second part कल बताना. ये first part का A, part 2 B part का B नहीं लिखा उसने, second part का. ठीक है.
तो RMS स्पीड के बारे में डिस्कस करना है. Will it be same or will it be different? And अगर different है तो which one will have more? ठीक है, यहाँ पे रोक दूं. Tomorrow we'll discuss some more numericals of this chapter, and then this chapter will be over and we'll start revising. Okay, Yes. thank you. चलो ठीक है. Thank you, sir. All right. Okay.